Good evening, all. Good evening, everybody. Okay. Good evening, Rintu, Lina, Mahi, Rakesh, Sasikan. Good evening, all. So, shall we start the session? Okay. Today, we are going to discuss the current affairs of 16th of August 2021, and this is Tapas sir, Faculty of your Current Affairs, Finance and Banking Awareness. जो मैंने जॉइन करना थी अर्ली जॉइन कर दियंतु. So without wasting time, we should start our session. Starting from question number 1. Name the organization that introduced a fixed deposit named Green and Sustainable Deposit to safeguard the environment from climate change. You need to give the answer. Yes. Can have answer? Name the organization that introduced a fixed deposit named Green and Sustainable Deposit to safeguard the environment for climate change. The answer is HDFC. The answer is HDFC. Okay. HDFC stand for Housing Development Finance Corporation. Okay, Housing Development Finance Corporation. It is not the HDFC Bank, but it is the HDFC as it's a parent company of HDFC Bank, which was started in the year 1977. Okay, HDFC and HDFC banks are two different entities. HDFC is a parent company and HDFC Bank is its subsidiary. और आम कहीपर कि ये दुईटा अलग अलग कंपनी भाव में स्टार्ट होते पर्टिकुलरली हाउसिंग फाइनेंस डेवलपमेंट HDFC स्टार्ट होता बट इन द ईयर 1993 HDFC applied for private bank license. Okay, at that time HDFC get private bank license and became the HDFC Bank. In that phase, same phases से अलग अलग banks ले like ICICI, your IDBI, your UTI. Okay, this same types of bank was started in the year 1993. But if you discuss HDFC is a finance company, particularly provide finance to the housing and development sector of our country. So, एथरे current affairs कौन कहूची ना it particularly introduced a fixed deposit named Green and Sustainable Deposit to safeguard the environment for the
climate change. What does it means? आमे तो different way रे जानथिबा कि हां गोटे बैंक रे different types of deposits रखा जाए, like गोटे term deposit आमे कहंती and second one demand deposit कहंती. In bank there is two types of deposit we are making. One is term deposit, one is demand deposit. Term deposit means for a particular period of time or for a certain period of time we have to deposit our money in bank account. Before that particular maturity period or maturity date we cannot withdraw the same amount. Okay, but demand deposit means at the time of depositors requirement or जेतबे depositors मानकर जहां भी demand रहबो से अनुसार हमें account रो पैसा withdraw करि परिबा without any hesitations. तो जदि टर्म डिपॉजिट को हमें डिस्कशन करचंती, टर्म डिपॉजिट को दुईटा टाइप रे डिवाइड करा जायछि. गोटे होछि फिक्स्ड डिपॉजिट एंड द सेकंड वन इज रिकरिंग डिपॉजिट. ओके, एफडी एंड आरडी. सेम एज डिमांड डिपॉजिट इज आल्सो कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स. वन इज सेविंग बैंक डिपॉजिट and one is current bank deposit. Okay, saving bank deposit and one is current bank deposit. Usually आम मानकर जो अकाउंट अछि सेटा को हम कोन कहउछन्ती सेविंग बैंक अकाउंट कहउछन्ती, जोथरे कि हमर किछि सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी हम डिपॉजिट कर रखुछन्ती, जोटा कि घरे होल्ड कर न रखी हम बैंक अकाउंट रे रखुछन्ती, and on that deposit we are getting some particular percentage of interest. But current account is not for ordinary people, it is particularly for the business people or business persons. तो business रो जहां भी account open हुए different companies to start करी, organizations to start करी, they usually open the current account for business purpose because current accounts रे number of transaction रे किछि limitations न थाए. ओके, तो number of transaction रे किछि limitations न थाए. But if you see the saving account, that is huge number of transaction पाई हमको permission दरकार, and most importantly it number of transaction limitations है. जदि गुटे limitations बाहर को जाएगी हमें transaction करछन then हम ऊपर different charges impose भी करा जाए. So term deposit देखिचंती, term deposit means कि गुटे particular period of time or maturity date पर्यंत हमको से पैसा रखिया पड़िबो, like fixed deposit and like recurring deposit. Fixed deposit रो मीनिंग होची at a time, for example 50,000 rupees गोटे बैंक अकाउंट रखले for the period of 5 years. Okay, fixed amount of money गोटे particular period of time पे रखले. But recurring deposit means it is like installment, like हम क्वार्टर हला किबा गोटे मंथ हला किबा 6 मंथ हला हमें पर installment wise किछि पैसा रखि परिबा, like 5,000 rupees per month for 5 years. It is recurring in nature. Monthly 5,000 हमें रखि चलिबा for the period of 5 years. But in case of fixed deposit we are putting a certain amount for a particular period of time or till the maturity date. Got it? It was the fundamental of the deposits, like your fixed deposit, recurring deposit, saving and current account. जदि हमें डिस्कस करिबा कि ए तीनटा टाइप रो डिपॉजिट्स रे और सॉरी चारिटा टाइप रो डिपॉजिट्स रे को डिपॉजिट रे हमको हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलछि. In which deposit we are getting highest percentage of interest? It is fixed deposits. Okay, number 1 is for fixed deposit, number 2 recurring deposit, number 3 saving deposit, and in current deposit we are not getting any interest. We are not getting any interest. We are getting transactions more than the saving bank accounts because it's a transaction karibar kichhi limitations na thai, but we are not getting any interest of that. So jodi hame ei current affairs ko relate kariba kon ejina a particular institution HDFC Finance Corporation gote fixed deposit open korchi, fixed deposit am offer doji jahar maturity kete din rahibo 36 months to leki 120 months है रखियो. ओके, 36 months to लेके 120 months है रखियो and जो थेगी इंटरेस्ट 6.55% हमको प्रोवाइड करेगा. बट
if somebody is more than 60 years of old, se manko additional 25% ro interest मिलिबो up to rupees 2 crores of deposits. Okay, and a deposit ro main intention kon hochi na a deposit रे जो पैसा रहिबो fixed amount रहिबो, this amount of will be invested in some green energy production or for the production of renewable energy, like जो थे कि किसी कार्बन एमिशन होबनी और हमरो क्लाइमेट चेंज पे एटा हेल्पफुल हे परिबो. Got it? Where is the headquarter of HDFC? It is in Mumbai. Where is the headquarter of ICICI Bank? It is also in Mumbai. Bank of Vadodara in Gujarat. And your State Bank of India, obviously, in Mumbai. As you know, maximum number of financial institutions are situated in Mumbai. That's why Mumbai is called the financial capital of our country. Because बहुत सारा institutions अच्छी, बहुत जगह organizations अच्छी जो मानकर headquarter होची मुंबई रे. Take an example: Reserve Bank of India, your NABARD, Exim Bank, like Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, you can say BSC, NSC, SEBI, Securities and Exchange Board of India, State Bank of India, Bank of India, your Axis Bank, ICICI Bank, HDFC Bank, Ias Bank. Okay, so maximum numbers of your financial institutions, it is situated in Mumbai. That's why Mumbai ko hame kon konti, it is the financial capital of our country. I hope के क्वेश्चन ना कुछ डाउट न थिबो. हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. Question number 2 is here. Identify the points that are correctly related to the annual report of NABARD for financial year 21. Option A is there. In financial year 21, the loans and advances given by NABARD grew by 15.8% compared to 6.5% of financial year 20. NABARD achieved a record year-to-year growth of 24% of its asset, and total outstanding loans is about 6 lakh crore in financial year 21. C. NABARD had formed around 6.8 lakh self-help groups in the financial year 21 and released rupees 170.2 crores for that, for the promotion of that. Give your answer. Yes. Answer कौन होगा इतने? The answer is only B and C. So one by one हमें discussion करिबा. कौन अच्छी इतने? के answer इतने कौन अच्छी? और इस topic रे कौन financial report release कर देगा? So first option से कहोजी कि in financial year 21, the loan and advances given by NABARD grew by 15.8%. Is it right? 15.8%? No, it is 25.2%. It is 25.2%. NABARD जहाँ भी loans और advances देची year to year comparison कले 25.2% रो growth करची with compared to financial year 20. But financial year 20 दे कितने percentage grow करचिला? Not 6.5%. It is 11.5% रो grow करचिला. Second,
Option B and C is right one. That's why NABARD achieved a record year-to-year growth of 24% of its total asset. It's the right answer. And its total outstanding loan was about 6 lakh crore in financial year 21. It will be Next, NABARD has formed around 6.8 lakhs self-help group. जोटा कोडिया रे कहउछन्ते स्वयं सहायक गोष्ठी in financial year 21 and released 170.2 crores for that. Okay, apart from that, NABARD set 1000 crore of credit guarantee fund, 1000 crore of credit guarantee fund to facilitate bank credit to farmer producer organization. Okay, to farmer producer organization. Farmer producer organization like some types of mandis koi pariba, some types of cooperative societies koi pariba, jemti amar trifed achi, jemti amar nafed achi. Okay, the institutions are particularly works for the promotion of agriculture in your rural areas. So jete numbers of farmers producer organization India रे grow करिबो सेते अधिक आमे कोन करि परिबा ना फार्म प्रोडक्ट्स को एक्वायर करि परिबा, फार्म प्रोडक्ट्स को बाय करके से मान को प्रॉपर प्राइस दे परिबा, फार्मर्स मान को प्रमोट करि परिबा कि केमति कोन से माने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की यूज करि परिबे एंड ऑल सेति पई नाबार्ड रो टारगेट अछि केते 1000 करोड़ रो ओके 1000 करोड़ रो क्रेडिट गारंटी फंड प्रोवाइड करा जिवो. क्रेडिट गारंटी फंड रो मीनिंग होछि कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस मान को लोन प्रोवाइड करा जिवो. जदि ए लोन डिफॉल्ट होछि और लोन अमाउंट एमाने रिटर्न न करि परछंती और नॉन परफॉर्मिंग एसेट रे कन्वर्ट हे जाउछि एनपीए हे जाउछि देन ताको बैकअप देबा पई से लॉस को मीट करिया पई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाखरे केते टंगा अछि 1000 करोड़ रुपीस रो गोटे फंड तयारी कर जाइछि. Okay, 1000 crore rupees ro gote fund tiyar kari jaychi and government of India is setting a target through NABARD that by the year 2022 2024 5 years ro gote target fix kara jaychi jo target re 10,000 okay 10,000 new FPO stands for farmer producer organization. Okay, इंडिया रे 5 इयर्स भीतर 10,000 न्यू एफपीओ को रिकॉग्नाइज करिबा और 10,000 न्यू एफपीओ मानन को फॉर्म करिबार ऑब्जेक्टिव अछि जोथि कि एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करिवो आ जहा टारगेट अछि गवर्नमेंट रो टारगेट अछि कि एग्रीकल्चर फार्मर्स मानकर इनकम डबल होबो बाय 2022 से टारगेट को नाबार्ड सूर्या में अचीव करिबा. ओके अचीव करिबा. No, NABARD will not particularly assist, NABARD will not particularly create or form the self-help group. NABARD promote the self-help group. Actually self-help group जहाँ भी तैयारी करा जाउची से माने बैंक्स थ्रू रे different organizations different NBFC और बैंक्स थ्रू रे केमति क्रेडिट प्रोवाइड करा जिवो से मानको से मानकर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पई ताकू नाबार्ड प्रमोट करिवो. ओके नाबार्ड रो काम हो कि डायरेक्टली जाई कि सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट करिवो बट सेल्फ हेल्प ग्रुप जहाँ भी प्रमोट करा जाइथिबो आई मीन सेल्फ हेल्प ग्रुप जहाँ भी तैयारी हिथिबो इन रूरल एरियाज by the help of some cooperative organizations or bank ताकू नाबार्ड फाइनेंस करिवो as well as नाबार्ड से मानको प्रमोट करिवो कि डिफरेंट एक्टिविटीज रे इन्वॉल्व करबा पाए. ओके सो नाबार्ड रिलेटेड आउट के कांसेप्ट पे डिस्कशन करबा. नाबार्ड रो स्टैटिक. नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1982. नाबार्ड एक्ट वाज passed
NABARD Act was passed in 1981. Its headquarters is situated in Mumbai. Headquarters situated in Mumbai. Initially NABARD form hitla NABARD ର ଦୁଇଟା ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो फंडिंग रे तयारी हितला और ओनरशिप रे तयारी हितला बट नाउ योर 100% ओनरशिप इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% ownership is owned by government of India and NABARD was instituted or NABARD was started on the recommendation of B. Sivaraman Committee. B. Sivaraman Committee, which is otherwise called Graphica Committee, which is otherwise called Bhavani. Good evening. Graphica Committee. Okay. India particularly agriculture sector और rural development को promote करिया पे NABARD institute करा गला और NABARD create करा गला. NABARD रो गोटे fund अछि जो fund को हमें RIDF fund बोली कहते. Okay, it stands for Rural Infrastructure Development Fund. Rural Infrastructure Development Fund. Actually, it is a fund of Government of India, but it is managed by NABARD. Managed by NABARD. Every budget, सब year रो budget रे किछि amount कौन करा जाए ना RIDF fund को दिया जाए जो fund रे different state government से ले किंबा union territory से ले किंबा rural areas रो लोक मान को loan provide करा जाए state मान को rule लोन प्रोवाइड करा जाए जोथरे की एग्रीकल्चर रो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पाई ए लोन हेल्पफुल वे एंड दिस फंड इज पर्टिकुलरली मैनेज्ड बाय NABARD. ओके, मैनेज्ड बाय NABARD. NABARD से इंस्टीट्यूशन जहां हेडक्वार्टर हमने कोठी पड़ले मुंबई. इंडिया रे एग्रीकल्चर रो ग्रोथ किंबा एग्रीकल्चर रो डेवलपमेंट पाई NABARD बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करछ. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. Question number 3. Which state government enrolled out Dalit Bandhu, a Dalit empowerment scheme? Dalit Bandhu or Dalit empowerment scheme. Give answer. Yes, the answer is Telangana. The answer is Telangana. तो तेलंगाना रे किए अछन सीएम के चंद्रशेखर राव. के चंद्रशेखर राव. Recently 7.60 crore. Okay, very good. Telangana 7.60 crore is provided to 76 Dalit family in the state of Telangana. What is the right answer? In the state of Telangana. अच्छा, ये जो दलित बंधु स्कीम क्रिएट करा गला कौन से स्कीम रो ऑब्जेक्टिव कौन रहउची? दलित बंधु scheme was developed that provide 10 lakhs rupees to each Dalit family of the state. Each Dalit family of the state, and here is an interesting thing that कि ये जो 10 lakhs rupees से मैंने को प्रोवाइड करा जाउची दलित फैमिली को सेठी किसी क्राइटेरिया नहीं कि पर्टिकुलरली से मैंने को सेक्टर रे ताको खर्च कर परिबे. दे आर फ्री टू स्पेंड देयर मनी. They are free to spend their money in different activities. But से मैंने को एडवाइस करा जाए कि जो 10 lakhs rupees से मैंने को प्रोवाइड करा जाउची से 10 लाख रुपीस से मैंने एमटी किसी प्लेसेस से इन्वेस्टमेंट करंतु जो प्लेस रे तांकर किसी रेवेन्यू जनरेट होबो और तांकर किसी इनकम हो.
तो स्पेसिफिकली दलित फैमिली और हरिजन फैमिली मानकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ग्रो करबा पे ए स्कीम लॉन्च करा जायतला जहार नाम अछि दलित बंधु स्कीम ओके सो हु इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना is Mr. Tamilsai Sundararajan. Tamilsai Sundararajan. And capital is Hyderabad. Capital is Hyderabad. Got it? अधिक किसी डिटेल्स जानिबा दरकार नै एथिरे बिकॉज़ ओवरऑल जिंस होछ कि ए कांसेप्ट कि 10 लाख रुपीस स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करछि तांकर दलित फैमिलीज मानकर लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करिया बे ओके इट इज नॉट हां इट सो दैट इट इज राइट आंसर Tamilsai Sundararajan. So next question बुझिबा question number 4 आत्मनिर्भर कृषि योजना to boost agriculture and Atmanirbhar Bhavani Yojana to boost horticulture. Two credit link scheme were launched by which state? को स्टेट ए दुईटा टाइप रो स्कीम लॉन्च करछन आत्मनिर्भर कृषि योजना for the purpose of agriculture, Atmanirbhar Bhagwan Yojana for the sector of horticulture. For the sector of horticulture. The right answer is Arunachal Pradesh. The right answer is Arunachal Pradesh. Okay. Under this scheme, this is a credit link scheme. Credit link scheme ro meaning होची कोन ना ए sector रो development पाई कोन करा जिवो किछि क्रेडिट प्रोवाइड करा जिवो जोथले कि एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल एज योर हॉर्टिकल्चर सेक्टर एंड अपन मानकर नो इट इज नॉट मध्य प्रदेश हियर इट इज अरुणाचल प्रदेश फॉर मीनिंग सो rupees 300 crore has been allocated particularly for this scheme to develop the agriculture and co-sector रहला horticulture sector or development. The scheme रे तीनटा component रोची. There is 3 components of this scheme. One component is your bank loan. Your second component is subsidy, and your third component is beneficiaries contribution. Okay, take an example. जदि गोटे फार्मर किछि अमाउंट रो लोन ने कि कोन करछि एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट करिया चाहूछि कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर रे किछि बिजनेस करिया चाहूछि और डेवलप करिया चाहूछि ताहले से जहां भी लोन नबो सेथिरे 45% रो ताकू सब्सिडी मिलिथिबो. फॉर एग्जांपल जदि 100 रुपीस रो से लोन नोछि ताहले 45% ताकू सब्सिडी मिलिबो. किंतु ए 100 रुपीस रो लोन किबा प्रोजेक्ट रे तार निजर कंट्रीब्यूशन केते टका रहबो. ओके द बेनिफिशियरीज कंट्रीब्यूशन विल बी 10% and the rest of money jaha bhi rahibo that will be provided as your bank loan. Got it? जदि 100 रुपीस अछि ताले बेनिफिशियरी 10% रो इन्वेस्टमेंट करिवो क्षेत्र जहां भी लोन मिलिबो लोन रो 45% गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करिवो and जहां भी रेस्ट ऑफ लोन होला लाइक नेक्स्ट 45% it will be provided by your bank. I hope you understand this scheme. So Arunachal Pradesh रे CM की अछंती who is the CM of Arunachal Pradesh? Arunachal Pradesh रे CM is Pema Khandu. उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ योगी बोली हम कहउछथि. मध्य प्रदेश who is the CM of Madhya Pradesh? Shivraj Singh Chauhan.
जदि हम एग्रीकल्चर पर्पस रे टिके डिस्कशन करिबा एग्री एटा बहुत इंपोर्टेंट इंडस्ट्री इंडिया रा एग्रीकल्चर जे सीजन हम देखुछन the season of agriculture is particularly divided into three types. One is kharif, one is rabi and one is zaid crops. Okay, kharif crops, rabi crops and your zaid crops. Kharif is basically your monsoon based crops, rabi is basically your winter based crops, and this is the middle period of rabi and kharif. You can say it is a summer season based crop. Kharif ro सबुठ important food crops होची paddy जेटा का मैं rice बोली कहंती, सेमती rabi crops रहउची wheat, and under zaid crops there are various types of fruits and vegetables are grown in this time of period, like your watermelon, like your muskmelon, like your cucumber and all. So जहाँ भी हम एग्जाम दबा like RRB एग्जाम अच्छी किंबा हमरो किसी SSC एग्जाम अच्छी और OPSC एग्जाम अच्छी and all, तो agriculture sector रो definitely one question will come. Agriculture sector रो definitely one question will come. So keep in mind कि खरीफ अंडर रे कौन सब फूड प्रोडक्ट्स आछि, रबी अंडर रे कौन सब फूड प्रोडक्ट्स आछि, एंड जायद अंडर रे कौन food products आछि. Okay, it is so much important to know. Same time जे हम डिस्कशन करिबा different types of revolution अछि जोटा कि एग्जाम रे आछे, like जदि कहबा हम green revolution. Green revolution is particularly deals with the production of wheat, and recently green revolution 2 जोटा कहउछन that particularly deals the production of rice, and the father of green revolution is Mr. M.S. Swaminathan. Simply, white revolution is related to milk production. Simply, blue revolution is associated with the production of fisheries or aquaculture products. आमे कहि परिबा aquaculture products. Very good. सेम जे देखु छन हमें ग्रे रिवॉल्यूशन, फर्टिलाइजर, ब्राउन रिवॉल्यूशन, लेदर एंड कोकोआ एक्सेट्रा. तो देखिए हमें गोल्डन रिवॉल्यूशन, it is your horticulture product, like honey, some fruit items and all horticulture products are coming under your what golden revolution. सेमती जो देखिबा हमें गोटे रिवॉल्यूशन अछि जार नाम होछि गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन. One revolution is there, golden fiber revolution. The golden fiber revolution is associated with jute production. Okay, silver revolution, X, silver fiber revolution, cotton. So एमती बहुत सारा रिवॉल्यूशन अछि, और से रिवॉल्यूशन डिफरेंट पायनियर्स माने अछंती, और से रिवॉल्यूशन को से प्रमोट करिया पई डिफरेंट फादर्स माने भी अछंती, लाइक मिल्क रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन ऑफ फादर अछंती डॉक्टर वर्गीस कुरियन. सेमती ग्रीन रिवॉल्यूशन रो फादर हम कहा कहउछंती डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन. सो आरआरबी जेतु गुटे रूरल बैंक रो एग्जाम मैक्सिमम टाइम रे एमती टाइप रो रिवॉल्यूशन है कि मैक्सिमम टाइम रे एमती क्वेश्चन आसी जाए, एंड एसएससी रे एग्रीकल्चर बेस्ड को करके एमती डिफरेंट एग्जामिनेशंस क्वेश्चन आसीबार प्रोबेबिलिटीज मैक्सिमम अछि. आई होप कि आज जहां भी रिवॉल्यूशन विषय में डिस्कशन कले
मन रखिबे एंड नोट्स कर देबे जेटा कमिंग एग्जाम रे हमको हेल्पफुल हो। नेक्स्ट एग्जाम जीवा सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच ऑर्गेनाइजेशन फंड्स द उभरते सितारे फंड that was announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman with a corpus of 250 crore to benefit small medium-sized companies in India. Small and medium-sized companies in India. कौन होगा आंसर? Last class yesterday we have discussed कि हाँ MSME sector उड़े थला micro small medium enterprises MSME sector रो development MSME sector रो जहाँ भी हमें definition पढ़ते जदि को पिला माने और को स्टूडेंट्स माने हमरा अटेंड करना है देन प्रीवियस डे रो क्लास टिके अटेंड करंतु देन विल गेट द राइट आंसर ऑफ दैट कि MSME सेक्टर कहा कहबा और MSME सेक्टर रो कोन क्राइटेरिया होची और कोन कंडीशन होची टू तार डिफाइन करिया पे ओडा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। Okay, so Saturday Sunday हाँ Saturday Sunday गोटे टॉपिक रे डिस्कशन करिया बट हमें जेतु लिंक करी पढिबार अछि तो लिंक करी न पढले बहुत जाके करंट अफेयर्स कवर होबनी आ करंट अफेयर्स मन रहिबनी। स्मृति आई कैन अंडरस्टैंड हियर। So the answer is B and C, Exim Bank and SIDBI Bank. Exim Bank and SIDBI Bank. कौन पाई? The scheme is particularly launched to give the benefit of small and medium-sized companies in India. Small and medium-sized companies in India, and that is financed by your option B and C. It is Exim Bank and SIDBI Bank. Exim stands for Export Import Bank of India. It is situated in Mumbai, and SIDBI, Small Industries Development Bank of India, which was situated in Lucknow. Okay, which is situated in Lucknow, and it is the sole agency that promotes the MSME sector or micro, small, medium enterprises in India. Got it? Same as last class we discussed about Mudra. Mudra is a scheme, okay, that launched by Government of India, and it is promoted by your SIDBI, where the three types of loan we are providing, like Sishu, Kishore and Tarun. Under Sishu, 50,000 rupees of loan can be provided. Under Kishore, more than 50,000 to or up to 5 lakhs. And under Tarun, 5 lakhs to 10 lakhs rupees of loan is provided under this scheme, exclusively for promotion of micro industries through Mudra, and MSME sector is developed through your SIDBI. We are going to the next question. Question number 6. Former CM Kalyan Singh passed away. Which of the state he belongs to? Kalyan Singh. Uttar Pradesh, Punjab, Odisha or Madhya Pradesh? The answer is Uttar Pradesh. The answer is Uttar Pradesh. Kalyan Singh. The answer is Uttar Pradesh. Say duita term CM hetle or 2 times CM hetle 1991, 92 re and again 1997 to 99. 2 terms. He was a CM of Uttar Pradesh, and he को पार्टी को बीजेपी करते हैं बीजेपी, okay, बीजेपी, and he was the governor of
Kahar thile? Himachal Pradesh and also Rajasthan. He served as the governor of Himachal Pradesh and Rajasthan. Recently देखिबा योगी आदित्यनाथ आम जानिछन भल भाबरे who is the CM of Punjab, Captain Amarendra Singh. Odisha, everybody knows Sri Naveen Patnaik ji, and Madhya Pradesh Shivraj Singh Chauhan. Shivraj Singh Chauhan. लास्ट क्लास उत्तर प्रदेश विषय में किसी स्टैटिक जीके डिस्कशन करते हैं, तो आई होप आज आ स्टैटिक जीके डिस्कशन करबा के दरकार नहीं उत्तर प्रदेश से लास्ट क्लास रो जदी क्लास देखिबा और वीडियोस देखिबा सेतरे उत्तर प्रदेश रिलेटेड किसी स्टैटिक जीके में डिस्कशन करि जंदी से साइट को और से सेशन को अपन माने फॉलो करि परिबे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द 17th governor of Manipur? Who was appointed as the 17th governor of Manipur? Seventeenth governor, yes. Is yes, option A, Lal Ganesha. Option A, Lal Ganesha is the 17th governor of Manipur. 17th governor of Manipur. Manipur रो जदी CM देखबे कियो छै देबे CM Manipur रो N Biren Singh. N Biren Singh. ला गणेशन को पार्टी को बिलोंग करती बीजेपी एंड तांकर नेटिव स्टेट होची तमिलनाडु. नेटिव स्टेट इज तमिलनाडु. से कहा को रिप्लेस करे? he replaced Najma Heptullah. He replaced Najma Heptullah. What is the capital of Manipur? What is the capital of Manipur? It is your Imphal. So that is a question. How many states are there in a country and how many union territories? Question to all. India केतरा state अछि और India केतरा union territories अछि? I hope के समस्त आंसर राइट होगा. I am waiting for an answer. Then I am going to move kariba. India state, number of state and number of union territories. Add your answer. Yes, that is 28 states. Very good. Mahi, right answer. It is 28 states and union territories is 8. Very good. Recently, last month I note it's 28 year, not 29. 28. Raj, it is 28. Recently, different state recent governors man appointed hitle, and it is important for our coming exam like Karnataka ro Ketle, Thawar Chand Gehlot, Mizoram,
हरिबाबू मध्य प्रदेश, MC पटेल हिमाचल प्रदेश, RB आरल्यकर गोवा, PS पिलाई त्रिपुरा, सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा, बंधारू दत्ताराय and Jharkhand, Ramesh Bayas. Okay, these governors are appointed by the president of our country. The president of our country. Rajendra Union Territory, number of Union Territories 8, not 9. 8 जन नुआ गवर्नर्स एक्सचेंज हेतले और चेंज हेतले डिफरेंट स्टेट्स रो तकी एग्जाम रे आसीबार प्रोबेबिलिटीज अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा. Identify the state or union territory that launched India's first smoke tower to improve the air quality. Identify the state or UT that launched India's first smoke tower to improve the air quality. I think guess करले पे आंसर ठीक है जीवो एंड इंडिया रा जोटी सबुठ अधिक पोल्यूशन होची से जगह रे हेटा इंस्टॉल करा जाईस and that is the national capital Delhi. That is the national capital Delhi. It is a 20-meter tall tower जो कि 1200 air filter install करा जायछि. Okay, 1200 air filter install करा जायछि and installation जे भी करछि और तार nodal agency, its nodal agency is Delhi Pollution Control Committee. Delhi Pollution Control Committee is its nodal agency. Okay, now here got importance होच कोन तार 1 किलोमीटर्स रेडियस रे जोटी भी से टावर इंस्टॉल करा जाय छै तार 1 किलोमीटर्स रेडियस रो एयर को से प्यूरिफाई करबो और improve the air quality with the radius of 1 kilometer of this tower. से टावर 1 किलोमीटर भीतर रेडियस जहां भी एयर अछि सेटा को कोन करबो प्यूरिफाई करिवार चांसेस बहुत अधिक अछि एंड प्यूरिफाई करिवार पई ही एटा इंस्टॉल करा जाय छै. जदि देखा जाय वर्ल्ड वाइड एयर क्वालिटी इंडेक्स रे which capital have worst qualities of air in the world. वर्ल्ड रे जते सब कैपिटल अछि सबटु वर्स्ट क्वालिटी रो एयर जदि हमें कंसीडर करजंती इट इज आवर नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली और न्यू दिल्ली. ये अछन सीएम अरविंद केजरीवाल. नेक्स्ट बार गुजरात सीएम विजय रूपानी एंड तमिलनाडु MK Stalin. नेक्स्ट क्वेश्चन जी भाई. Ministry of Earth Science announced India's target to add earthquake observators by 2021 and adding 100 more by which year? Minister of Earth Science एबे के अछंती with the State Minister of Earth Science Jitendra Singh.
Jitendra Singh is a Minister of Earth Science and Technology in state rank. से कौन कहले ना इंडिया रा अर्थक्वेक को मैपिंग करिया पे और अर्थक्वेक को ऑब्जर्व करिया पे पूर्वानुमान करिया पे जो मशीन इंस्टॉल करा जाउची एबे रिसेंटली केतरा मशीन ऐड करा जाची आउ एडिंग करा जिवो 100 मोर मशीन एडिंग करा जिवो बाय व्हिच ईयर yes the answer is 35. The answer is 35. Recently 35 observatory has been added and additional 100 will be added by 2026. By 2026. Okay, but at present India रे केते एमती ऑब्जर्वेटरीज अछि जोटा कि अर्थक्वेक को ऑब्जर्व करछि at present there are 115 numbers of observatories there जोटा कि अर्थक्वेक को ऑब्जर्व करछि इंडिया रे and we have planned 100 more install करा जिवो by 2026 by 2026. Go to the next question. Identify the correct points that is correct related to Tokyo 2020 Summer Olympic Games in which India will field its largest contingent ever. Coming exam जहाँ भी अच्छी काली OCS exam अच्छी all the very best समस्तंकु and I expect कि गोटे question तो आसिथिबा Olympic रे गोटे ना गोटे question 100% आसिथिबा and I expect कि समस्त ठीक ठाक आंसर दे के आसी परिबा. Option A. High jumper Devendra Jhajaria will be the flag bearer of India in the opening ceremony of Tokyo Paralympic. Option B. Union Sports Minister Arunach Thakur launched a song Kar De Kamal Tu for India's Paralympic contingent. Option C. Its official mascot is Somiti and for the first time badminton and taekwondo will be introduced by replacing sailing and 7A side football. Give your answer. Answer कौन हो इतरे? A, B, C or D? A, only A, B, B and C, C and D, A and B. I feel like Amitabh Bachchan who is asking question in KBC. I expect give the right answer. The answer is only B and C. The answer is only B and C. So, option is there. High jumper Devendra Jhajaria will be the flag bearer. Is it the right one or not? It is not Devendra Jhajaria. It is Mariappa Thangavelu. Okay, Mariappa Thangavelu will be the flag bearer of Indian opening ceremony of Tokyo Olympics. It is not Devendra Jhajaria. Okay, option 2. Union Sports Minister Arunach Thakur कौन कले what is theme or song launch कले इरा को जल्दी कर दे कमाल तो it is the right one and this song is composed by Sanjeev Singh. The song is composed by Sanjeev Singh, who is a Divyang cricket player. Okay.
and option C is right. Its official mascot is Someti, and for the first time badminton and taekwondo will be introduced by replacing selling 7A side football. Okay, it's all about your 2020 summer para olympic, but this 2020 हम खाली only summer olympic देखिबा. 2020 summer olympic और Tokyo summer olympic से flag bearer के थे in opening ceremony. Mary Kom and the captain of Indian hockey Manpreet Singh. Okay, Manpreet Singh. And summer olympic time भी हमारा वाला song तैयारी करा जाइतला और theme तैयारी करा जाइतला. जरा नाम उतला तू Thanle, and it is composed and sung by Mohit Chauhan. So any types of question may come, like flag bearer of the opening ceremony for summer olympic as well as flag bearer for the paralympic. जदि हम ओलंपिक देखुचंदी ओलंपिक रे sorry basically 4 types of olympic हम देखुचंदी. What is summer, one is winter, one is paralympic, and one is youth olympic. One is paralympic and one is youth olympic. Okay, so summer olympic 2020 Tokyo रे venue थिला, but due to covid issue 2021 रहला, but theme रहला 2020 Tokyo. The organizing body of olympic is IOC, which is located in Lausanne in Switzerland. Located in Lausanne, Switzerland. We won 7 medals, 1 gold, 2 silver, and 4 bronze in Summer Olympic 2020. In Summer Olympic 2020. Okay, जहाँ भी exam अच्छी coming exam, I hope कि एक क्वेश्चन रो इंपोर्टेंस बहुत रहेगो, एंड ओलंपिक को रिलेटेड जहाँ भी आओ कमिंग क्वेश्चंस अच्छी आपण मन टिके प्रिपेयर हेकि जिबा दरकार. So those who have exams for OCS, I wish them all the very best. I wish them all the very best for that. But a छोटा tip और छोटा motivation आपण मानक देबा को चाहिए, like students are very much confused, or students are very much feel discouraged at the time of going exams, and semane hopeless है जल्दी, because they think कि number of posts is limited and number of applicants are more. Yes or no? Number of post कम थे, number of applicants अधिक थे, सेति पे बहुत जगह हमर स्टूडेंट्स माने डिमोटिवेट हो जाते फ्रॉम द इनिशियल स्टेज. आ जदी प्रिपरेशन ठीक से लेवल नथिबो, एट द एंड एग्जाम टाइम आसु कोन हो जाय, हम मोटिवेशन लेवल टिके डाउन हो जाय, बिकॉज़ हमें भाबंती और स्टूडेंट्स आर थिंकिंग कि हमको छाड़ी के अलगा समझते अलगा कंपटीटर्स माने पाठ पढुचंती, बट हमें माने पाठ पढु नांती ठीक से, लाइक हमें सब बेले निजो को एस्टिमेट करंती, एंड हमर कंपटीटर माने को सब बेले ओवर एस्टिमेट करंती. दैट्स द प्रॉब्लम. हमर कॉन्फिडेंस लेवल somehow some point of time रे टिके कमी जाय. ओके, सो टेक एन एग्जांपल, जदि हमर 500 नंबर ऑफ पोस्ट्स अछि,
ओके 500 नंबर ऑफ पोस्ट अछि तो आम मानक माइंड रे कोन थाए और स्टूडेंट्स मानक माइंड रे कोन थाए ना ओनली 500 नंबर्स ऑफ पोस्ट एंड मेनी मोर एप्लीकेंट्स आर देयर लाइक 50,000 ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर ओनली 500 नंबर ऑफ पोस्ट तो हमर जॉब हेबो ना नहीं ए कंफ्यूजन रे हमें एग्जाम को भी ठीक से कंसंट्रेट करि परंदिनी एज वेल एज हमर स्टडी को भी प्रॉपर्ली कंसंट्रेट करि परंदिनी बट जदी हमें टिके रियल सेंस रे बुझिबा कोन ना ए एग्जामिनेशंस रो तीनटा पैटर्न रहउछ फॉर एग्जांपल दिस मेन एग्जाम्स एंड देयर इज interviews prelim mains and interviews so jodi hame consider korchonti 500 students will get selected in the final list re selection hochonti 500 ta mane interview re jodi 1:3 re bi se mane call korchonti then 1500 students will be called for interview that means main exam will qualify how many students 1500 of students so जदि 1500 of students main exam qualify करिवे then prelim exam केते जन qualify करिवे 5000 students will get qualified for prelim exams जदि हमें 1:5 रे भी नोचंती 7500 students will get qualified for prelim exams okay टिके माइंड रे एटा को आनिबा पय चेष्टा करंतु number of post is 500 that means final selection केते हेबो 500 but prelim रे तो qualify जदि हम 1:5 पे करचंदी then पाखा पाखी 7500 बा ताठो अधिक नंबर सो सिलेक्शन मे बी हेई पारे ओके सो जदि 1:10 रे भी देखुचंदी then minimum तो 5000 स्टूडेंट को से सिलेक्ट करबो इन prelim exam then main exam then interview but हमें कोन करचंदी ना एट द एंड फाइनल ताको ही देखि दोचंदी कि हन टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन विल बी 500 देन हमरो नंबर ऑफ पोस्ट कम अछि एंड आवर एप्लीकेंट्स इज मोर तो से माइंडसेट को टिके साइड करंतु काइना कमिंग डे रे जतरा हमें एग्जाम देबा छिबा हमें केते जन पिला फाइनल सिलेक्शन हेबे सेटा न देखि एटलीस्ट फर्स्ट स्टेजेस रे केते पिला सिलेक्शन हे परबे हमें ताको देखि जाय परिबा लाइक इफ देयर इज 500 नंबर ऑफ पोस्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि इन prelims 5000 students may be selected so those who know कि how 500 posts let them know 500 कौन रहबा दरकार there are 5000 number of posts so there is no need to worry as you prepare well for last few years or few months you should not be worried about it okay I wish everybody all the very best for coming exams like RI exams and our OCS exams and all I hope कि शीघ्र भल से परफॉर्म करके आसंतु कॉन्फिडेंटली जानतु आ किछि एक्सपेक्ट करिबेनी कि हां एया क्वेश्चंस आसीबो एया क्वेश्चंस का हमें एक्सपेक्ट करके एक्चुअली प्रॉब्लम होय कोन ना हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके जानती यदि क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके जिबा देन हमको डर लागे मे बी जस्ट सिंपल क्वेश्चन आसला दरकार नै आई विश एवरीबॉडी ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग आई होप ए सेशन आपन को ठीक ठाक लागे थिबो एंड कमिंग डेज रे